Hello friends, today we are going to discuss the topic ratio. First, let's see the meaning of the term ratio. See, the term ratio means comparison. Ratio का मतलब होता है comparison. Comparison किसका करना है? Comparison of two or more quantities. तो minimum दो quantities होनी चाहिए for a ratio, two or more quantities. The quantities should be of same kind. When I say same kind, इसका मतलब है दोनों quantities same unit में होना चाहिए, दोनों. For example, दोनों की units हो सकती है kgs, liters, meters, years, etc. Same unit होना चाहिए. Ratio is expressed by division. For example, A by B. So this is called the ratio. इसको दूसरा जो फॉर्म है एक्सप्रेशंस का, यू कैन एक्सप्रेस द रेशियो H to B, ऐसा भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट A oblique B. All these forms are the expression of a ratio. Now, ratio of two quantities, in a ratio of two quantities A and B, A is called the first term. First term बोलते हैं, and B is called the second term of the ratio. A जो फर्स्ट टर्म है उसको आप एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंड B दैट इज द सेकंड टर्म उसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं. सो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द antecedent in 5/6 ratio. So antecedent means the first term, that is the 5, and the consequent in this ratio is 6, that is the consequent, second term. Now the next thing you have to understand in the topic ratio is the ratio is always expressed in the lowest term, or you can call it a simplest form. Let's see how. For example, there is a ratio which is given to you, that is 6/3. Now we have to write this ratio in its simplest form. Simplify इसको कर देंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So simplified form 6/3 की हो जाएगी 2:1. So it is always expressed in the simplest form, that is the lowest term. Again, like there is a ratio like 9/3. This is not in simplest form. We have to solve it. 3 1s are 3, 3 3s are 9. So simplest form of this ratio is 3:1. So this is the simplest form of this ratio, 3:1. Now next thing you have to learn in this is that if a ratio, for example A/B, this is a ratio. If the both the terms of the ratio is multiplied by the same number, for example x, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, the ratio will remain same. For example ax upon bx, the ratio will remain same, a by b. So for example, if there is a ratio 3/2, and if I multiply both these terms by 2, so it will become 6/4, but again when we will solve it, it will become 3/2. So even if we multiply the ratio by any number, then the ratio will remain the same, it will not change. But one thing you have to remember, whatever number you will multiply, it should be non-zero number, then only the ratio will remain same. If you multiply a by b by 0, then it will not remain the same, so it will become 0. Next thing we will see that the order of the term is very important in a ratio. For example 5/6, the order is 5 पहले आ रहा है और उसके बाद 6 आ रहा है. So this is a ratio. If I change the order like 6/5, it will never be the same ratio. 5/6, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 6/5 लिख दिया, so this is not the
same ratio. So order is important in the ratio. ये एग्जाम में आ सकता है, whether the order of the term is important in the ratio. Yes, it is important. The most important thing you have to remember that in ratio the quantity should be of same kind, that is same unit. For example, there cannot be a ratio between the age of a person and the salary of a person. No, there cannot be a ratio. Similarly, there cannot be a ratio between the weight of a person and the age of a person. Why? Because these two will be in different unit. Weight can be in kgs and age can be in years, so there is no ratio. Now let's try to find out the ratio. How to find the ratio between two quantities? Suppose we have to find the ratio between 150 grams and 2 kgs. We have to find the ratio between 150 grams and 2 kgs. First thing you have to do, the unit should be same. Right now it is in grams and this is in kgs. So always try to convert the bigger unit into a smaller unit. So I will convert 2 kg into grams. So 1 kg is equal to 1000 grams. So 2 kg will be 2000 grams. So 150 upon 150 grams upon 2000 grams. So 2 kg I will write 2000 grams. Now I will simplify, because you remember that we have to simplify this into the, we have to write in the lowest term. So this will be written as 3 upon 40. This is the simplest form. That is, the ratio between 150 grams and 2 kg is 3:40. Similarly, question can be asked that find the ratio between 25 minutes and 45 seconds. Now time is given. Now we have to convert either minutes into seconds or second into minutes. So always try to convert the bigger unit into smaller. So 1 minute में होता है 60 seconds. So 25 minutes को अगर मुझे seconds में convert करना है तो 25 into 60 divided by 45. So it will become 100 upon 3. So the ratio between 25 minutes and 45 seconds comes to 100 upon 3. Now let's try to see how to compare two ratios. There are two ratios and you have to compare, and you have to find which one is bigger ratio. So let's see one example. Suppose we have to compare two ratios, 2 1 by 3 upon 3 1 by 3, and we have to compare with a ratio 3.6 upon 4.8. Now which one is greater, which one is bigger ratio? This is very difficult to tell unless until we convert it into the equivalent fraction. So हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे इन दोनों के रेशियो को, then it will be easier to compare. How to convert? Let's simplify the first ratio. 2 1 by 3 को मैं लिख सकता हूं 7 upon 3, right? Similarly 3 1 by 3 को I can write 10 upon 3. Now this 3 will get cancelled and बचेगा क्या, 7 upon 10. So I have simplified this into 7 upon 10. Again I will simplify this. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, दोनों के डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 36 upon 48. Now 36 upon 48 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 by 4. So it will become 3 by 4. Now I can replace these two ratios. 7 upon 10 को कंपेयर करना है आपको 3 by 4 से. Now still the denominator, you can see these two denominator are different. So I will take the LCM. So LCM आ जाएगा इसका
लेट्स से 40 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा, 4 into 7, so 28. Again 40 divided by 4, it comes 10, and 10 into 3, that is 30. So now I can write 28 upon 40 and 30 upon 40. अब ये जो रेशो था, this we have converted into 28 upon 40, और ये जो रेशो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 30 upon 40. Now you can see that denominators are same. Now we can easily find out which ratio is greater. Now 28 and 30 में 30 is greater, so this ratio is greater than this. Now the next thing we are going to learn is multiplying ratio. ये multiplying ratio क्या होता है? Let's see. I will take one example to explain the multiplying ratio. Suppose there is a person, उसका जो weight है वो x kg weight है, and suppose he is trying to reduce his weight in a ratio. वो ratio क्या है? 7:6, यानी 7 kg है आज उसका, तो tomorrow his weight will be 6 kgs only. इसका मतलब ये reduce कर रहा है 7:6 ratio में. तो उसका न्यू वेट कितना होगा? तो अभी उसका वेट x kg है, तो रिड्यूस किस में कर रहा है? 7 अगर आज वेट है तो कल कितना होता है इसका? 6. तो अगर x kg वेट है तो टुमारो हिज वेट विल बी x into 6/7. ये जो 6/7 है इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग रेशियो. सो फॉर एग्जाम्पल, if any quantity is increasing or decreasing in a ratio AH to B, अगर वो AH to B में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी X है, ओरिजिनल क्वांटिटी विल बी कन्वर्टेड टू X into B/A. ये जो B/A है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग रेशियो. इसका मतलब एक न्यू फॉर्मूला हमने यहां पे सीखा है कि कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है AH to B रेशियो में, तो जो नई क्वांटिटी आएगी उसको हम इजीली निकाल सकते हैं जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको B/A से मल्टीप्लाई करके, यानी सेकंड टर्म आपकी ऊपर आएगी एंड द फर्स्ट टर्म विल बी बिलो. तो ये एक फॉर्मूला हो गया. कोई भी क्वांटिटी अगर AH to B में चेंज हो रही है तो ओरिजिनल क्वांटिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू X into B upon A, that is second term upon first term. Now we will see some features of ratio, that is some properties of ratio one by one. First we will see the property of inverse ratio. What do you mean by the inverse ratio? See, one ratio is said to be inverse of another if the product of both these ratio comes 1. तो A/B will be inverse of B/A अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है. So these two ratio will be inverse of each other. For example, 5/3 का इनवर्स रेशियो हो जाएगा 3/5. दैट इज जस्ट आपको रिवर्स करना है इसको. सो इसका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो इट विल बिकम 1. सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी. इफ इन अ रेशियो A/B A इज ग्रेटर देन B, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर इनइक्वालिटी. A यानी फर्स्ट टर्म अगर सेकंड टर्म से बड़ी है तो इसको बोलेंगे हम ग्रेटर इनइक्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल 7/5 इज अ ग्रेटर इनइक्वालिटी बिकॉज फर्स्ट टर्म इसमें बड़ी है. इसी तरह से इफ the first term is less than the second term, it is called less inequality. For example, 3/5, इसमें first term 3 है, second term 5 है, तो first is less than the second,
so it is called less inequality. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंपाउंड ऑफ रेशियोज, टू और मोर रेशियोज का कंपाउंड कैसे लेते हैं, लेट्स। कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. फॉर एग्जांपल ए एंड बी and C and D, these are two ratios. So compound of these ratio, these two ratios का जो compound करेंगे तो वो जो ratio आएगा that will be AC upon BD. So what you have to do in compound, you just have to multiply these two ratios. For example, 2/3 and 5/7 का compound ratio क्या होगा? So I simply have to multiply these two ratio. 5 into 2 it is 10 and 7 into 3 that is 21. That is 10 upon 21 is the compound of 2/3 and 5/7. इसी तरह से तीन रेशो का भी आप कंपाउंड ले सकते हैं. ए बी एक रेशो है, सी डी एंड ई एफ. तो इसका कंपाउंड रेशियो जस्ट मल्टीप्लाई द अपर टर्म एंड द बिलो टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सो ए इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ, दिस विल बी द कंपाउंड रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न इज डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो सबसे पहले देखते हैं. डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है अ रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ. जैसे ए अपॉन बी को इसी से कंपाउंड कर दिया, ए अपॉन बी से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. दिस इज कंपाउंडेड रेशियो, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी. सिमिलरली ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है ए बी का, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए टू बी को आपस में. सो इट विल बिकम द ट्रिप्लीकेट रेशियो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब. So it is very simple to find the duplicate ratio or triplicate ratio. For example, 2/3 का duplicate क्या होगा? Duplicate के लिए just multiply कर दो 2/3 को 2/3 से, तो it will become 2 की power 2 upon 3 की power 2, that is 4 upon 9. ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा 2/3 का? तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 एंड 3 की पावर 3 हो जाएगा 27. सो दिस इज ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट. रिमेंबर ये वर्ड यूज हो रहा है सब. सब का मतलब है अब आपको यहां पर रूट लेना है उसका. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर a अपॉन b एक रेशियो है, तो व्हाट विल बी द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a बाय b? You just have to take the under root of a by b. That will be the subduplicate of a by b. For example, 4 upon 9 एक रेशियो है, इसका सबडुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सो सिंपली टेक द अंडर रूट ले लो आप 4/9 का. सो root of 4 will be 2, root of 9 will be 3. So 2/3 is the subduplicate ratio of 4/9. इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट लेंगे. फॉर एग्जांपल 8 अपॉन 27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है. सो वी विल टेक द क्यूब रूट 8 अपॉन 27, इसका क्यूब रूट ले लेंगे. सो 8 का क्यूब रूट आ जाएगा 2 एंड 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3. सो 2/3 विल बी द subtriplicate ratio of 8 upon 27. Next thing you have to learn is commensurable quantities. See, commensurable quantities का मतलब है वो क्वांटिटी जिसको हम इंटीजर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर्स. फॉर एग्जांपल 3/2, ये होल नंबर है 3 और 2, तो इस रेशियो को हम इंटीजर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. 3/2 होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं है. So these 3 and 2 quantities will be called as commensurable. इनको हम बोलेंगे commensurable.
क्वांटिटीज, जिसे हम रेशो ऑफ इंटीजर्स में लिख सकते हैं. बट इफ two quantities cannot be written in two integer, for example √3 upon √2, इसको हम इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो इट इज कॉल्ड इनकमेंसुरेबल. इनकमेंसुरेबल. आप चेक करके देखना, √3 का अगर आप अंडर रूट लेंगे 3 का, तो ये समथिंग डैश 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 खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा. सिमिलरली 2 का भी आप अंडर रूट लेंगे तो वो क्वांटिटीज कैसी है, डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होगा. सो वी कैन नॉट represent in whole number. That is why it is called incommensurable. Now the last thing you have to learn in the ratio is continued ratio. See, continued जो रेशियो रहता है, continued रेशियो में आप कंपेयर करते हैं या रिलेशन पता करते हैं बिटवीन 3 और मोर. याद रखना, 3 एंड मोर, नॉट 2 एंड मोर. 3 एंड मोर क्वांटिटीज का रिलेशन या कंपेयर जब करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो. अगेन क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, सेम काइंड. सो 3 और मोर. फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, ये 3 क्वांटिटीज हो गई. तो ये जो रेशियो आ रहा है इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूड रेशियो. फॉर एग्जांपल you have to find the continued ratio between 200 rupees, 400 rupees and 600 rupees. तो ये 3 क्वांटिटीज है, इनका कंटिन्यूड रेशियो निकालना है, तो इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है. 1 2 and 3. 1:2:3. So this is the continued ratio of 200 rupees, 400 rupees and 600 rupees. Now this is the end of the first lecture of the ratio, in which we have discussed all the concepts of the ratio. In the second lecture of the ratio, we will solve few important practical problems. These problems can be asked in the exams.